अगेन इट हैज टू बी मोर राइट बहुत ढीला है ढीला ये जो पाम ऐसा पकड़ेगा दैट्स इट क्रश भी नहीं करना है लोड भी नहीं करना है इट्स नॉर्मल थिंग राइट कैन वी ट्राई टू राइट लिटिल मोर बैक राइट मैं कितना जोर दबा रहा हूं उतना आपको जोर देना राइट लेट्स गो थिंक अगेन आप थोड़ा नर्वस एज के लिए बॉडी से वैसा सेट करते हैं बी नॉर्मल बिकॉज़ यू नो दिस हैंडशेक विल शो कि आप क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है यस सर प्लीज कम नजर अगेन यू आर स्टिल रिलैक्स कूल राइट आराम से कुछ नहीं बस सब देख रहे हैं या राइट ये आप फ्री करो रिलैक्स राइट कूल रिलैक्स राइट Sir, we will need some improvements. Let's see. Sir, can I have? किस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए उनको बताओ ना. Okay, come. Let's see. देखिए, जैसे आपको और प्रैक्टिस करना है. Cool काम है. आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप जाके किसी को बिजनेस पिच कर रहे हो या बात कर रहे हो. You are working with the number one company, right? And your postures, your directions, your way of speaking, every has to be that much normal, right? उनको लगना चाहिए गलती से एक से भर्ती हो गया ऐसा नहीं है दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक बार आप हैंडशेक देके जाके बैठ रहे ना सही है एक फील आ जाएगा फिर बाद में वो बात करने के टाइम चालू करने का दैट क्या है बिकॉज़ दिस हैंडशेक इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू मीट एंड डू इट राइट तो दैट गिव्स द बेस्ट इम्प्रेशन सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट राइट दैट्स इट राइट अगेन अ गुड थिंग बट लेट्स रिलैक्स आप रिलैक्स नहीं है Can you find that sir he is not relaxed right थोड़ा वो हाथ थोड़ा स्टिफ है क्या कैसे होगा क्या होगा इस तरह से या that's good but एक ही ध्यान रखिएगा सामने वाले का जो ग्रिप कैसा है उसके ऊपर ग्रिप है नहीं है तो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ है आपको देना ही है आप ऐसा दे देंगे तो लगेगा कि नहीं है कहीं ना कहीं अपना अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा मुझे फील आता है that's a great vision that's one right yeah right again grip चाहिए strong grip आप strong करो ना फिर लाइट कर लेना चलेगा right yes that's good fine great can we practice yes yes sir yeah again और थोड़ा चाहिए इधर आइए देखिए yeah okay yes नहीं टाइट चाहिए आप ऐसे हाथ दे दिए नहीं टाइट चाहिए yes पकड़िए बिंदास कुछ नहीं होगा बिंदास पकड़िए मेरा जो प्रेशर आप देख रहे हैं ना वैसा प्रेशर चाहिए राइट हाँ या दैट्स गुड राइट तो ये टोटल बॉडी में चाहिए क्योंकि अपन खाली हाथ दे देते हैं हाथ नहीं है ये पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए ऐसा कि यस लगेगा है या सही है राइट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट इंप्रेशन यू गिव टू द सर टेल मी इट विल बी मोर कैजुअल एंड मोर यू नो Yeah, okay. Fine, yes, can you practice? Yeah, that's good. Sir, आपको बहुत strong है। मेरा हाथ दर्द है। मेरे भी हाथ practice होती है, right? Normal, full normal नहीं, इसमें बहुत सारे आइडेंटिफाई करना है कि हाथ देने के बाद आपका क्या चेंजेस हो रहा है उसके अंदर। आपको ग्रैब करते ही मालूम पड़ेगा कि कितना strong कर रहे नहीं कर रहे, right? It's a normal thing. हाथ देने के बाद बोलेगा नहीं यार बहुत खतरनाक है, बहुत दूर है, वैसा नहीं है। It's a normal thing. सब लाइट है कि बहुत strong है। नहीं थोड़ा रिलैक्स लीजिए टेंशन में है रिलैक्स कूल राइट या रिलैक्स नहीं है बट यू प्रैक्टिस राइट थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए सर कैन बी प्रैक्टिस राइट हैव अ नर्वस राइट यस या अगेन लिटिल रिलैक्स और कूल और वो जो कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए ना वो नहीं मिल रहा जैसे मैंने इनके पास ऐसा देखा इस तरह का जी फर्स्ट केस है इस तरह का यस वो कोई जाने का टाइम फर्स्ट मीटिंग आप करते हैं और ऐसा करके हाथ मिला देना समझ रहे हैं वेरी डोमिनेंट है और अपने को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या अपने को डील में कितना मार देगा करेगा बट डोमिनेशन अगर यस आइए सर आइए सो दैट्स अ सबमिसिव राइट वो सब चीज में दे रहा है नॉर्मली इट हैज टू बी स्ट्रेट हैंडशेक नॉर्मली इट हैज टू बी हैंडशेक राइट ओके फाइन अगेन विल गेट इनटू दिस डोमिनेंस submission and quality this practice will have it end up with right जब हमने को स्टार्ट देगा तभी करते हैं we leave this here because it's not complete right it requires something improvement right इसको देख के आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग है कितना स्लो क्या करना है वो सब चीज आपको देता है राइट अगेन नेक्स्ट थिंग जैसे मैंने बोला डोमिनेंस हैंड
sake में you have to understand कि वो person क्या है, right? That's the thing I'm telling you, right? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ submissive and rates. ये आपने देखा ये हैंडशेक कोई पहला बल मिलता है तो करता है नहीं करते हैं पहला मिलेगा तो नहीं करते they do it only when the other person for a very long time. किसी को 2 साल के बाद अरे कैसा है क्या है ऐसा 2 हाथ पकड़ कैसा that is fine. लेकिन वो पहला मीटिंग करता है उधर 2 हाथ मिलाता है something is missing, right? ये जो बॉडी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्स है ये कोई भी किसी में भी उसको छोड़ देता है तो वहाँ पे you will have a problem कि आदमी ठीक नहीं कुछ गलत है आपको तकलीफ देगा. Second मैं बोल रहा हूँ कि you are also beautiful, so confident, आपके अंदर इतनी अच्छी चीज़ है तो ये सब चीज़ ऐसा फ्लरिश क्यों नहीं करता है, राइट? वो जो बॉडी लैंग्वेज में है किससे बात करने में स्मॉल टॉक्स, राइट? ये सब चीज़ में ये अपने आप को करने में क्या जाता है, राइट? जस्ट कूल काम ऐसा कुछ बनने में अच्छा है, राइट? मीन टू से चेंज योर पर्सनालिटी, राइट? आप अपने आप को सोच के रहते हैं ऐसे ही है ऐसे करना ये नहीं है जस्ट हैव अ चेंज, राइट? ओके फाइन. अगेन ये करते हैं कोई अच्छा प्यार करते हैं आपको बहुत जोर से जानता है बड़े लोग आपको ऐसा बोलते हैं अरे कैसे कैसे है ना दे ओनली अलाउड टू डू दैट. सो अगेन दैट्स अ लैंग्वेज दैट्स अ बैरियर, राइट? ये सब साइंस लैंग्वेज यू कैन नॉट चेंज दिस. नहीं ये मेरी मर्जी है मैं करता हूँ ऐसा नहीं ये सब ठीक है ऐसा नहीं ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थिंग, राइट? ये तो है चबा के आप खुला से निकल अच्छे. अगेन दिस वन, राइट? Handshakes, we done exercise, right? Again, this is nervous and all, right? Will fast. ये बिजनेस मीटिंग में ये सब जरूरी है. वो ऐसा बेटर है तो ठीक नहीं है, राइट? सर so you have to understand something is going wrong. उसको अलग कुछ करना पड़ेगा कुछ अलग बोलना पड़ेगा ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा because this is not a thing, right? Frustration, negativity. आप बोल रहे हो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या तो इस तरह का होगा. So this body language आपको make sure ये होगा, राइट? मैं थोड़ा टाइम मेरे बॉडी लैंग्वेज को एक्सपेक्ट कर रहा था. आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय सेल्फ. अभी सर बात कर रहे थे वैसे मैं इससे मिल रहा था. तो इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ रिसीविंग थिंग, राइट? अगर कोई बड़े लोग बात करते हैं ना तुम अब लोग क्या करो ना ओके मैं सोचता हूँ ये डिलीवरी जो देते हैं ना अथॉरिटीज उनका जो लैंग्वेज होता है दिस इज रिसीविंग. अगर ये ऐसा करता है इट्स अ बॉडी लैंग्वेज अच्छा है आप जो बोल रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं टेक इट इन दैट वे. ये मैंने और भी जगह पे देखा कॉलेजेस में प्रिंसिपल बात करते हैं तो प्रोफेसर वगैरह ऐसा कर रहे थे और मैंने सबको बोला आप लोग इधर देखो मैं बाद में क्लास में बात करता हूँ. उनको बोला देखा आप लोग कैसे करते हैं तो ये जो रिसीविंग है दिस इज रिसीविंग सॉर्ट ऑफ थिंग वेरी ब्रॉड अच्छा ओपन और रिसीविंग दैट्स व्हाट दिस वन. एवरीबॉडी नोस अथॉरिटी ये बोलने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे बॉस हूँ. जैसे आप स्कूल्स में देख रहे हैं एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बोलने की जरूरत नहीं है. Again, it's a sophisticated मैं कौन क्या हूँ एक गर्व फील कर रहा है उस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज जैसा रहता है. ठीक है नर्वस ये बोलने की जरूरत नहीं एवरीबॉडी नोस इट. बोर्डम एवरीबॉडी नोस इट. ये हो गया इंटरेस्टिंग. नॉर्मली होता नहीं है किसी को दिखता नहीं लेकिन ऐसा इंटरेस्टिंग है. जजमेंटल आप कुछ भी चीज़ पूछो सर क्या आपने क्या सोचा है उसका सीधे कर जाएगा मैक्सिमम थोड़ा तो जाएगा क्या सोचा है कहीं ना कहीं एक बार जाके तो आएगा. दैट्स द जजमेंटल, राइट? मैं आपको बोला डिसीज कोई भी चीज़ बोलने नहीं बोलने का उनका मुंह पे आएगा दैट्स रॉन्ग इंप्रेशन. तो अपने आप को हमेशा सेफ रखेंगे तो अच्छा है इधर रखेंगे कहीं ना कहीं तो अपना गलतियाँ बोल दी हमारे सो दैट यू हैव टू अवॉइड इट. मैं यहाँ पे झूठ बोलने का टेक्निक नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ कि क्या टेक्निक है. ये भी डिसीज है ये भी अच्छा नहीं करना क्या है ऐसा ये भी गलत है सब इमोशन से होना चाहिए. अगेन इस तरह का सब जैसे फ्रस्ट्रेशन एंगर बहुत टेंशन हो जाए तो सबका ऐसे क्या है ना आप देखे रहेंगे सब जाता है. एंड द वॉज हियर maybe defension aspect yeah it can be person style maybe that's it. okay इनसिक्योरिटी फियर कोई भी नया जगह जाएंगे तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं. इट्स अ फीमेल सिग्नल्स ऑफ इनसिक्योरिटी वो ऐसा नहीं करते ऐसा करते हैं, राइट? अगेन रेडी फॉर एवरीथिंग सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं बिजनेस को चेयर पे बैठे यूरोपियन स्किल्स हैं ये बैठे हैं
This is not allowed in India. Right? This is very insecure. Right? कोई ऐसा बैठा है तो समझ लेने का बहुत टेंशन में है, उनको जाके बात नहीं करना, बिकॉज यू कैन सी द एंगल्स नीचे भी वो इतना इंसिक्योर है। जैसे कि कोई पैर पर से टैप मिलाते रहते हैं चप्पल को इस तरह का, वो भी कोई सोच रहा है। एंड ये मैंने बोला मेरे अब आप जिससे को बात करते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, तो वो शर्ट ठीक करेंगे, दुपट्टा ठीक करेंगे, या थोड़ा बाल ठीक करेंगे, ये सब अपने आप होते रहेगा। तो दिस इज साइन लैंग्वेज की आप जो बात कर रहे हो उनको पसंद आता है। सो दैट्स अ नॉलेज यू गेट अकॉर्डिंगली आप उसे डील कर सकते हैं। ये लाइक्स यू, प्लीज टॉक मोर, और बात करना अच्छा लग रहा है, ठीक है, यू आर इंटरेस्टिंग, यू आर अमेजिंग, लव टू बी विद यू, बी कंटिन्यू, बी विद मी, ये सब चीज़ होती है। जजमेंटल्स थोड़ा ऐसा जजमेंट्स होते हैं, लेकिन थोड़ा और स्लाइड्स है। सुपीरियरिटी क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज में ऐसा स्ट्राइट देखेंगे तो सुनेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है और तो थोड़ा बेंड होकर सुन रहे हैं, ऐसा ज़्यादा बेंड किए तो इसके लिए बेंड हो जाता है, बेंड होकर नहीं सुन सकते। आई थिंक दैट्स इट, स्पीकिंग मोर। लेट्स सी सम वीडियोस। बॉडी लैंग्वेज देखिए, अभी कितना है मुझे चल रही है, एक 10 मिनट्स का वीडियो है बॉडी लैंग्वेज का, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। सर रिपोर्ट क्यों नहीं चलो आगे वाला है वो देखते हैं आगे क्या क्या होगा। ये देखिए, ये अपन आज अभी देखेंगे सेल्स ट्रेनिंग के बारे में होगा, सेल्स ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, पर्टिकुलरली इस तरह का लीडरशिप मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब एक दूसरे का पसंद नहीं या कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दैट्स इट, बॉडी लैंग्वेज वी हैव ऑलरेडी सीन। फर्स्ट थैंक यू फॉर दिस स्लाइड, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है सेंसिंग। Again, second, I was just quickly going through it कि what all we are going to see today, right? Skills, ये सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि और बोल नहीं करूँगा मैं, right? उसका इंटरनेशनल एक्सपर्ट बात करेंगे, आप खाली देखेंगे, बीच बीच में डाउट्स भी एक्सपर्ट करता है। जैसे कि बिजनेस एटिकेट्स, आप किसी के साथ लेने के लिए जाए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उनके साथ आप खाने के लिए गए, तो वहाँ पे कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट्स बीन लुक्ड एट। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है वो तो दैट इज ऑलरेडी है। टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट कैसे कैसे बना सकते हैं, नॉर्मली सब चिट्ठी में लिखते हैं फिर टू डू लिस्ट करते हैं, वो चिट्ठी कभी खत्म नहीं होता है, होते रहते काम, सो दैट कैसे कर सकते हैं। ट्रांसैक्शन एनालिसिस, टाइम टेबल तो यूल सी, गेस्चर साइंस वी हैव डन, प्रेजेंटेशन, दोस प्रेजेंटेशन राइट, नेक्स्ट एनुअल डे में प्रेजेंटेशन, एमएनसी में जो प्रेजेंटेशन होता है उस तरह का एक प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, that is a best thing I would like to have because I have gone through all the videos, the presentation, the confidence level, right? थोड़ा सा टचअप वगैरह इधर जो मैं चाहता हूँ जो यूनिवर्सिटी है वो that will look into it last, right? ये सब लास्ट में देखते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर्स में क्या होता है, उनका क्या इंडिपेंडेंस है दैट देखेंगे, राइट? सो एक मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। देन हाउ वी गो हेड अप, इसमें बहुत सारे रोल प्लेस होगा, जैसे कि आप क्लाइंट हो, ठीक है, आप किसी को पिच करने जा रहे हैं तो आप कैसे बात करते हैं, उनका पूरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लस पेमेंट के लिए आप फॉलो करते हो उस तरह का क्या क्या पेमेंट फॉलो करते हैं, उसमें कैसा क्लोजिंग होता है, वो उसमें क्या क्या इमेजेस आप छोड़ते हो, उस तरह का चीज़ भी। बीच में गेम्स वगैरह होगा, कम्युनिकेशंस में बात करने के दूसरे के दिमाग में क्या चलता है उस तरह के गेम्स वगैरह, डेमो एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस, राइट? इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में लुक करते हैं। अब बता दो इधर ने इसको टॉपिक चेंज करते हैं तो विल गो अहेड, राइट? ये मेरा सेशन नहीं है, ये आप लोगों का सेशन है, राइट? तो कहीं पे कुछ चीज बोल रहा है पास करते हैं वीडियो खत्म होगा, तो उसके लिए पहले बोलना 9 मिनट्स का है। like People's body language in business, when you're selling, negotiating, or interviewing, is useful. But having a better understanding of your own body language will lead to helpful changes that will be extremely useful throughout your business life. We'll look at what individual body language signals are in a moment, but before we do that, let's talk about what body language actually is. It's the visual display of what someone
thinks and feels. What someone is actually thinking at that moment in time is what I refer to as short-term signals. How someone is feeling or the mood they're in takes a lot longer. Like confidence, enthusiasm, boredom or disappointment, these are all longer-term signals. Short-term or instant signals can sometimes be so subtle or small they can be difficult to see. However, if the conversation is going slowly wrong, there'll be a number of these small, subtle signals that add up to a mood change. Just with your permission, जैसे कि anything goes wrong, गलत हो गया, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है, आप पैर देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं रखते हैं सर, पैर अंदर चले जाता है, राइट? दे आर कॉन्फिडेंट, कुछ ऐसा गलत हो गया, गलत जॉब किया, हमको पसंद नहीं आया इंटरव्यू में, तो that's it. And this is longer term body language. If you spot subtle or small signals and respond quick enough by changing tack and asking different questions, you can recover the situation. However, if you miss a number of signals over a long period of time, it can cause problems and result in lost rapport or possibly lost business. To explain it a little bit more as well is the fact that we talk at about 100 words a minute, yet we think at 800 words a minute, nearly 50,000 words an hour. क्लियर है, जैसे हम जो बात करते हैं 100 वर्ड्स पर मिनट बात कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला सुनने की कैपेसिटी 800 मिनट्स पर मिनट है, इसके लिए हम जो भी बोल रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, आप घूमते रहते हैं अपना दिमाग की तरफ, because those words that we're thinking come out through the subconscious mind, through the body, and with a little bit of practice you can read them. Body language can vary from one individual to another. However, there are some elements that are common to all of us. So let's start by looking at the initial greeting, such as how far away we stand from someone, how we shake hands, eye contact, eye contact. How far away we stand from someone can be split into zones. There are 3 basic zones to consider. Zone 1, the polite or we've just met zone, which makes people feel comfortable and less threatened. Zone 2 is everything is okay and trust has been established. And finally, Zone 3 is reserved for good friends or someone in business you've known and trusted for some time. If you stand too close too early to someone, it can cause them to feel uncomfortable. The strength of a correct handshake is difficult to describe accurately, but it is important to get it right. Too soft and clammy and it will give a bad impression and a sign of weakness. Too hard and strong and it will give the impression of arrogance and overconfidence. So, try to offer your hand slightly open as this will show friendliness and trust. When shaking hands with someone who is dominant, with a strong handshake, try taking that extra step forward and walking almost into them, straightening their hand at the same time. This will neutralize the situations that makes them feel uncomfortable because you've invaded their space. The eyes. Where do you stare? Well, most of us are told to look someone in the eye to convey or transmit trust. It comes from when we were young and we were challenged by an elder to look me in the eye and tell me you were telling the truth. The problem with staring someone directly in the eyes is that it's at best uncomfortable, at worst it's intimidating and causes people to feel uncomfortable, wary and even suspicious. Looking at the people's eyes can be rewarding because the eyes dilate or constrict depending on enthusiasm or concealment. When someone is interested, excited, enthusiastic, their eyes will dilate. Likewise, when someone is concealing something or even lying, their eyes will constrict, often described as beady eyes. This is very useful in the sales process and when negotiating or even interviewing because eyes are easy to read with a little bit of practice. After you've been talking to someone for a few minutes, you'll have a good feel for how often they're looking at you and where they look. If they start to look up after you're asking questions, they're probably trying to recall what happened or how they feel about the questions that you're asking. However, if they start to look down and away, they may be trying to conceal their
real feelings about something, or maybe trying to avoid giving you an honest answer. As a general rule, it's better to look someone in the face rather than directly into the eye. The cheekbones is fine as well, because this is regarded as the social zone. It makes people feel far more comfortable. Just as a tip, if you're with someone who's trying to intimidate you, keep on talking to them and stare at their forehead and keep it up. It's amazing how it makes them feel awkward after a few minutes, and they start to